Hello everyone, this is Anubhav Jain and welcome you all in the Smart e-learning classes. I hope you all are good during this pandemic time. So today we are going to start the syllabus of history of Icse. Today we will discuss on the chapter History and Introduction on lecture 1. First of all, I want to introduce you with a book. This is the first page of your book whose name is Focus on History and Civics. This is Goel Brothers Prakashan's book. These are the content of your book. Chapter 1 is History and Introduction. As usual, first of all, we will summarize our today's topics that are what is history and relevance of history. So first of all, introduction to the history. History is the study of our past, a record of the events that happened long ago. It means the history is a subject that tells us about the events that happened a long time ago. It is a written account of the development of human civilization, which helps us to understand the political and social systems, economic activities, and culture of people, causes, and effects of events in a sequence. It means history tells us about the beginning of a human life to the development of human civilization. जब ह्यूमन कैसे एक हंटर और गैदरर से एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू किया, कैसे उन्होंने अपने पॉलिटिकल एंड सोशल सिस्टम्स को डेवलप किया, कैसे उन्होंने अपनी इकोनॉमिक को डेवलप किया, ये सारी की सारी चीज़ें हम लोग हिस्ट्री में पढ़ते हैं. नेक्स्ट इज हिस्ट्री नॉट ओनली लुक्स एट इम्पॉर्टेंट इवेंट्स सच एज वॉर, revolutions, change of governments, and great inventions, but also explains why and how. It's a very key point that history not only looks about the important events, वो सिर्फ हमको कुछ important events के बारे में नहीं बताता, जैसे कि wars के बारे में, revolutions के बारे में, या government के changement के बारे में, great inventions के बारे में ही नहीं बताता है, बल्कि ये भी बताता है कि आखिर why it had done and how it had done. क्यों और कैसे हुआ. It is the story of progress of man from the beginning of civilization to the present time in a chronological order. There is a new word chronological. Chronological मतलब इवेंट के एक के बाद जो एक इवेंट होते रहे हैं हिस्ट्री में, उनको एक सीक्वेंस में बताता है कि इसके बाद ये हुआ था, इसके बाद दूसरा इवेंट. इस तरीके से एक ह्यूमन की प्रोग्रेस हुई, कैसे सिविलाइजेशन पूरे सेटल्ड लाइफ की. नेक्स्ट इज मीनिंग एंड रेलेवेंस ऑफ हिस्ट्री. बिफोर स्टार्टिंग द हिस्ट्री यू ऑल आर थिंकिंग दैट व्हाई डू वी स्टडी हिस्ट्री. हमको क्यों पढ़नी चाहिए, आपको ये सोचना क्यों पढ़नी चाहिए. वी स्टडी द पास्ट टू लर्न हाउ आवर फोर्स तो इसके इसलिए पढ़नी चाहिए कि हमको पता चले कि वो हमारे पूर्वज कैसे थे. हिस्ट्री का लिंक हिस्ट्री जो है वो हमारे पास्ट और प्रेजेंट के बीच का एक कड़ी है जो हमारे पास्ट और प्रेजेंट को जोड़ते हैं. एवरी न्यू इन्वेंशन एंड एवरी न्यू आइडिया और कोई भी नया इन्वेंशन होता है तो उसका जो आइडिया होता है वो हमको प्राचीन काल से ही मिलता है. History tells us about kings, queens and about the life of people. History हमको क्या बताती है कि आपको राजाओं की, रानियों की और आपकी जो प्रजा होती है, जो साधारण पीपल हुआ करते थे, उनकी लाइफ कैसी होती है. Next is we learn about the achievements of people, how they change people's life and influence not only them but future generations.